Hello student, in this video lecture we are going to discuss about cardiac cycle and cardiac output. So first of all, we are discussing about the cardiac cycle. What is cardiac cycle? Cardiac cycle is a time during the time what will happen with the heart. It is known as cardiac cycle, and the time is it is the period of beginning of one heartbeat to the beginning of the next is known as the cardiac time. In simple, we are just say time between two heartbeats is known as cardiac cycle. In this, we are discussing what events are happened in this time into the heart, and we are also discussing what how does the blood travel from heart uh, into the heart and out of the heart. Before we are going in detail, we are just discussing about the simple path of blood in a simple manner. In this diagram you can see, you know that deoxygenated blood from the body to the right atrium. First of all, blood reaches to the right atrium. That blood is deoxygenated, okay, and that right atrium blood goes into the right ventricle through tricuspid wall, okay. In right side there is tricuspid wall, and by that deoxygenated blood from right ventricle, uh, it goes into the pulmonary artery, and eventually that blood goes into the lungs to get oxygen, okay. And that oxygenated blood from the lungs returns through the left atrium. That blood came into the left atrium, and left atrium oxygenated blood goes to the left ventricle through bicuspid wall, that is also called the mitral wall. Sometime examiner ask you the mitral wall. The mitral wall is another name of bicuspid wall that is located at the left side of heart. Then left side of heart ventricle contracts and blood goes to the body tissues through aorta. It is the simple blood flow of heart, simple blood flow through the heart. Next, we are discussing about cardiac cycle, which is our topic. What main events are happened during the cardiac cycle? You must know that the cardiac cycle duration is near about 0.8 second. All things are happen with this time only. 0.8 second cardiac cycle is there. And what happens in the cardiac cycle? First of all, the first step is the atrial contraction, that is also known as atrial systole. Cardiac cycle begin from there. Atrial systole, that means atrias are contracted. एट्रियाज जो हैं वो सिकुड़ते हैं. राइट और लेफ्ट साइड के एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से ब्लड स्क्विज होगा इन द लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में. उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझना होगा. एट्रियल सिस्टोल जो है इट इज़ नियर अबाउट 0.1 सेकेंड. एंड जो रिमेनिंग टाइम है दैट इज़ कॉल्ड एट्रियल डायस्टोल, जो होता है 0.7 सेकेंड का. सो हेयर इट योर 0.8 सेकेंड इज completed. Some terminology is there, you can understand that. Just say, you can see here, isometric contraction. Isometric contraction is, that means blood volume of atria ventricular are same, and the no more contraction occur in the atria and ventricle. They are completely contract for a 0.5 second. The ventricles contract as the closed chamber isometrically. इसके दौरान उसके अंदर वेंट्रिकल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं
उनके अंदर से कोई ब्लड बाहर नहीं जा रहा, कोई ब्लड ऐड नहीं हो रहा। देन फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अकर, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद में द एक्सेक्ट ventricular contraction occur. This phase is also known as rapid ejaculation. Rapid ejection, that means ventricular contraction is there, ventricles are squeezed, contract, and due to that movement ventricles uh, ejaculate the blood. Okay, then next, blood ejaculation. This is also known as slow ejaculation या वेंट्रिकुलर इजैकुलेशन। इसमें क्या होता है, द वेंट्रिकल्स जो हैं वो कंप्लीट क्लोज हो चुके हैं, कंस्ट्रिक्ट हो, कॉन्ट्रैक्शन उनमें हो चुका है ना, उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, बट फॉर फ्यू सेकेंड्स दे मेंटेन देयर एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड दे आर स्टिक्ड देयर। द उस टाइम पे उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, इस वजह से वहाँ से थोड़ा कम ब्लड निकलता है, उसको हम बोलते हैं स्लो इजेक्शन। नेक्स्ट आता है, उसके बाद आता है देन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो गया, देन स्टेप ऑफ कंप्लीट डायलेटेशन स्टार्ट होता है। उसके अंदर वेंट्रिकल्स डायलेट हो रहे होते हैं एंड एट्रियाज का कॉन्ट्रैक्शन बिगिन हो जाता है। फर्स्ट आता है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। इट इज़ सेम एज द कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन के बाद में नो वॉल्यूम गेट आउट एंड नो वॉल्यूम गेट इन to that, same like that, isometric relaxation, ventricular diastole till not started, but when ventricles are constricted completely, उनमें कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है बट डायस्टोल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। दैट अर्ली स्टेज ऑफ द डायलिटेशन इज नोन एज वेंट्रिकुलर आइसोमेट्रिक डायलिटेशन। अब इसके अंदर भी किसी तरह का कोई ब्लड ऐड नहीं हो रहा है वेंट्रिकल से एट्रियम में, ना कोई ब्लड इजैकुलेट हो रहा है। देन इसके बाद आता है वेंट्रिकल्स फीलिंग। इट इज़ द कंप्लीट डायस्टोल स्टेज, जिसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रैपिड फीलिंग होती है जैसे ही रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है, देन स्लो फीलिंग होती है, एंड स्लो फीलिंग में ही नियर अबाउट 75% ऑफ जो वेंट्रिकल्स हैं वो फिल होते हैं। एंड आफ्टर द वेंट्रिकुलर फीलिंग अगेन द नेक्स्ट साइकिल बिगिन स्टार्ट। तो एट्रियल कंट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ साइकिल, इट एंड्स ऑन द वेंट्रिकुलर कंप्लीट फीलिंग, और वी कैन से वेंट्रिकुलर गेट ब्लड टोटली उस पे ख़त्म होता है। ओके, दिस दैट ऑल इवेंट टेक्स 0.8 second, and we must discuss that in a separate class. How does your cardiac cycle you can see on the ECG? It is another important question. Okay, it's all about the cardiac cycle. Then we are discussing about the cardiac output. You seen in your notes, cardiac output is what? Cardiac output is the amount of blood pumped by the heart in a minute. 1 मिनट में हार्ट के द्वारा निकलने वाला ब्लड, 1 मिनट में, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट इन ए नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन। दैट इज़ नियर अबाउट 5 लीटर, 4.5 to 5 लीटर होता है। यहाँ पे दो टर्म हैं, वन इज़ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड अनदर वन इज़ कार्डियक इंडेक्स। First, we are discussing about stroke volume. Stroke volume is the volume of blood pumped by the ventricles with each heartbeat. That is, in your notes you can see, stroke volume, एक बीट में आपके हार्ट ने कितना ब्लड एजुकेट किया, that is near about 70 ml. And the cardiac output is stroke volume into heart rate per minute. एक स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, हार्ट और आपका हार्ट रेट पर मिनट कितना होता है, नियर अबाउट 72 बीट्स पर मिनट। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 मिनट में आपका ब्लड कितना निकलेगा, नियर अबाउट 5 लीटर्स। ओके, नेक्स्ट एक टर्म है यहाँ पे कार्डियक इंडेक्स। कार्डियक इंडेक्स क्या है? कार्डियक इंडेक्स, द करेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग कार्डियक output by the body surface area and it is called cardiac index. cardiac index क्या है? आपका ब्लड कितना
1 सेकंड में निकलता है। ठीक है, आपका ब्लड जो है दैट कैलकुलेट डिवाइडिंग बाय द कार्डियक आउटपुट डिवाइडिंग बाय द बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, तो नॉर्मल कितना होता है इन एन रेस्टिंग पोजिशन, कार्डियक इंडेक्स इज इट इज़ अ पैरामीटर फॉर हीमोडायनेमिक्स, it is important parameter. The normal cardiac index is 2.5 to 4.5 liter per minute per meter square. आपका बॉडी का जो सरफेस एरिया है दैट इफ दैट इज कार्डियक टोटल कार्डियक आउटपुट अगर बॉडी सरफेस एरिया से डिवाइड किया जाए तो जो निकल के आता है वैल्यू जो निकल के आती है दैट इज कॉल्ड कार्डियक इंडेक्स। ओके, and it is normally it is 2.5 to 4.5 liter per minute per meter square. Okay, next we are discussing what are the factors that can alter or affect your cardiac output. Then the first is venous return. Venous return means how much blood returns into the heart, that is called venous return. So अगर venous return कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, मीन्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cardiac output. If venous return is low, then your cardiac output will be low. Position of body. When a person is standing or sitting, then the gravity force applied, gravity more blood is in the lower part because of gravity, and that cardiac output will be decreased, that directly leads to the decreased cardiac output. ओके, नेक्स्ट आता है मसल पम्प। मसल पम्प मतलब कि व्हेन यू आर वॉकिंग, व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग, योर मसल्स स्क्वीज द wall of the veins. That is the special feature we can discuss in previous videos. Your vein having the specified valve that protect the backflow of blood. That muscle pump squeeze that walls and helps to pumping the blood. That's why it's called the muscle pump. Okay, or secondary pacemaker in our body. That muscle pump, if the muscle pump pressure is greater, then your cardiac output will be great. That means it increase the venous return ultimately, and the cardiac output will be increased. Respiratory pump. Our diaphragm and intercostal muscles are also pushing the blood veins to pushing the blood veins that promotes your cardiac return or venous return. So additionally pushing the diaphragm downward during inspiration also causing intra-abdominal pressure to increase. For the increase in the pressure gratitude between abdominal vein and thoracic vein, which pushes the blood from abdominal vein into thoracic vein, this is termed as the respiratory pump. When you are इंस्पिरेट, वेन आप जब सांस लेते हैं तो इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि आपका डायाफ्राम नीचे जाता है, द डायाफ्राम पुशिंग द थोरेसिक वेन एंड द abdominal vein, and that pushes allows the greater venous return. That venous return, we are in the first point, in that we are discussing that if venous return is greater, then your cardiac output is increase. Next and last, we are discussing about the peripheral resistance. Peripheral resistance, in simple language you can understand that if a blood vessel is shorter in diameter, that restricted the flow of blood. ठीक है, lesser than the diameter, greater is resistance. If diameter is lower, then the resistance will be higher. Okay, that maintain the blood flow, and it is in inversely proportional to the peripheral, it inversely proportional to the cardiac output. If your peripheral resistance is greater, your cardiac output will decrease, and if your peripheral resistance is low, then your cardiac output will be increase.
So it's all about the cardiac cycle and cardiac output. I hope that you are able to understand the cardiac cycle. Here I requesting to you, all of you must kept your notes during the lecture, and if you have any doubt you can ask me. Okay, thank you class, thank you very much.